Hello students, our first chapter is the best Christmas present in the world. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? Pause the video and reply in the comment section. If the comments are disabled, you write it in your rough notebook. Let's play it again. Do you know which events the dates below refer to? A. 4 July 1776. I guess you all have read these dates in your social studies classes. B. 17 December 1903. C. 6th August 1945. D. 30th January 1948. E. 12th April 1961. F. 20 July 1969. Once again, pause the video and write your answers. You can check the answers on page number 23 as well. So let's check it. Let's move to page number 23. Yes, here it is. American Declaration of Independence was in 1776, and similarly the other details are mentioned. Kindly go through it and remember the dates. Maybe this question will not be asked in your English, but definitely such questions are going to be helpful for your NTSC exam. And my students, I would like to tell that NTSC classes are also being held. You will be taught accordingly. But today let's complete the first chapter. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. आई गेस आप लोगों को पता होगा रोल टॉप डेस्क क्या होता है. ऐसा डेस्क जिसके आपको ऊपर थोड़ा सा ड्रॉर्स वगैरह मिलेंगे डेस्क के साथ. इफ़ जस्ट आई विल पॉज एंड आई विल शो यू हाउ you can see that this is a roll top desk. So I think you can guess what kind of a roll top desk looks like. The lesson is written by Michael Morpurgo. So the narrator, I mean the Michael Morpurgo here explains. Let's move to page number 1. Yes, that once he went to Bridport. एक बार वो Bridport जाता है और वहाँ की एक जंक शॉप में, आपने देखा होगा आजकल शहरों में भी काफ़ी इस तरह की शॉप्स होती हैं जहाँ आपको पुराना सामान, जंक सामान मिल जाता है, सेकेंड हैंड आइटम्स यू कैन परचेज़. तो इसी तरह से जो नरेटर है वो Bridport की एक जंक शॉप में गया और उसने देखा वहाँ एक रोल टॉप डेस्क है. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ऑक. और जो शॉपकीपर था उसने एक्सप्लेन किया कि भाई ये 17th century, अर्ली 19th century का ये हमारा जो रोल टॉप डेस्क है और ये ओक ट्री का बना हुआ है. ओक ट्री की जो लकड़ी है ओक वुड का बना हुआ है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव. नरेटर एक्सप्लेन्स कि मुझे एक ऐसा ही रोल टॉप डेस्क चाहिए था, लेकिन जब भी मैंने ख़रीदने की कोशिश की तो आई फाउंड इट ऑलवेज़ वेरी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. और जो अभी जो ये रोल टॉप मैंने देखा था इसकी सिचुएशन वॉज नॉट गुड और इसके काफ़ी पीसेस हो रखे थे. वन लेग क्लम्जिली मेंडेड. एक जो उसकी लेग थी वो प्रॉपरली रिपेयर नहीं थी, बहुत ही बुरी तरह से रिपेयर्ड थी. मेंडेड मीन्स रिपेयर, क्लम्जिली मीन्स नॉट प्रॉपरली. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और जो आग से जले हुए कि उसमें निशान थे एक साइड में. इट वॉज़ गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. और जो बेचने वाला था वो भी उसको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सेल कर रहा था. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. और मुझे लगा कि अगर मैं इसको ले जाता हूँ तो आई कैन री मैनेज इट, इसको मैं दोबारा से अच्छी कंडीशन में ला सकता हूँ. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट.
हालांकि मुझे ये पता था कि एक रिस्क है, एक चैलेंज है, बट मुझे ऐसा करना ही था. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. So I paid the amount to the shopkeeper. Not me, means it's the narrator who paid the amount and brought it back to his workroom. And his workroom was at the back of the garage. I began work it on Christmas Eve, and he started working on it. He started repairing it. और क्रिसमस ईव पे उसने जो है उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने जो उसका रोल टॉप था वो पूरी तरह से रिमूव किया. नॉट मी, मीन्स द नरेटर रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड ही पुल्ड आउट ऑल द ड्रॉर्स. मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाया था एंड आई थिंक यू कैन मेक इट दैट द ड्रॉर्स आर देयर इन द रोल टॉप डेस्क. सो ही रिमूव्ड ऑल द ड्रॉर्स. द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. और विनियर मीन्स जो एक प्लास्टिक की जो एक कोटिंग होती है वो तो सभी तरह से उखड़ चुकी थी. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी एंड या इट्स रिटन इन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एज वेल. विनियर मीन्स अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड और फर्नीचर ऑफ चीप वुड. So the veneer was removed from everywhere, almost everywhere, and it seemed that because of the water, the veneer had been damaged. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. Fire उस रोल टॉप डेस्क को देखकर लग रहा था कि फायर और जो वाटर है they both have clearly damaged the desk. Tall, the word tall आपने सुना होगा, tall text आप सुनते हो, but here it's not that tall. Here tall means damage. Students, please note this meaning is not that tall text, it's damage. So let's continue. The last drawer was stuck fast. और जो last drawer था उस roll top desk में वो पूरी तरह से अटका हुआ था. It was means I was not the narrator was not able to move it. It was completely stuck. I tried all I could to ease it out gently. He tried his best to take it out easily, but it was of no use. In the end, I used brute force. So in the end, he used his complete force, full force he used, and I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. और जैसा कि हम लोग भी कई बार करते हैं जब हमसे कोई चीज़ नहीं निकल पाती है, वी हिट इट विद आवर फिस्ट, हम अपनी मुट्ठी से उसको मारते हैं. सिमिलरली द नरेटर डिड इट. ही स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ हिज फिस्ट एंड सडनली द ड्रॉर केम ओपन. इट ओपनड and when it was opened, he found that there is a shallow space under. उसके अंदर एक थोड़ा कम गहरा स्पेस था and there he found that it was a secret drawer. और उस ड्रॉर के अंदर एक और secret drawer था. There was something in there. वहाँ कुछ ना कुछ था. I reached in and took out a small black tin box. So the narrator searched it and he found that there was a small black tin box in it. Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting. So it was taped, it was sealed with a sellotape on the top, and it was so when it was sealed, it lined note paper was written, जो ruled notebook का paper जो आपका होता है, it was pasted on it and written on it in shaky handwriting. तो ऐसा देख के लग रहा था कि भाई handwriting जो लिखने वाला है वो शेक कर रहा था उसका हाथ. और उस पर क्या लिखा होता, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. जिम का लास्ट लेटर जो 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ था. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. और उस पर लिखा हुआ था कि जिस दिन मैं मरूं तो उस दिन मेरे साथ ही है दफनाया जाए. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. मुझे पता था, means the narrator knew it, that it's not good to see the things which are the secret things of someone.
it was wrong, it was not ethically right to open the box, but curiosity got the better of my scruples. लेकिन जो मेरी curiosity, so scruples means बेटा संकोच जिसे हम बोलते हैं when we are shying of something, and if we see at the word better, so better ठीक है, but here it's a phrase better of my scruples. It means better of something. When it is said, it means if you cannot stop yourself from allowing that feeling to make you do something. तो यहाँ ऐसा ही हुआ जैसा कि आप लोगों के साथ भी होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं तो आपका संकोच जो है वो हट जाता है. और आई एम श्योर इन स्पाइट ऑफ दिस कोरोना वायरस थ्रेट आपकी जो क्यूरियोसिटी है टुवर्ड्स गेटिंग नॉलेज वो अभी भी उतनी ही है. यू आर नॉट स्क्रपलिंग ओवर एनी ऑफ सच थिंग्स. सो ऐसा ही उस नरेटर के साथ हुआ है. उसको पता था कि भाई बॉक्स उसको नहीं खोलना चाहिए, बट ही वॉन्टेड टू नो कि उसके अंदर क्या है. सो ही डिड दैट एंड इट यूजुअली डज. हमेशा ऐसा होता है कि क्यूरियोसिटी जो होती है हमारे संकोच को हमेशा हरा देती है. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप. द एड्रेस read Mrs. Jim MacPherson, 12 Copper Beaches, Bridport. और उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था. उस एनवेलप में एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस जिप मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट. ब्रिडपोर्ट का ही कोई एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस जिम के नाम पे. ब्रिडपोर्ट जो कि डॉर्सेट में है. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. नरेटर टुक आउट द लेटर एंड ओपनड इट. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914, and the letter was written with a pencil and the date was December 26, 1914. So this was the first part of this chapter. Please do these two questions. Comprehension check. What did the author find in a junk shop? Question 2. What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? So this is going to be your homework today, and by tomorrow you will get the video of part 2 as well. Till then, bye bye, take care and be safe. Thank you.